फिजियोलॉजी ऑफ स्पेशल सेंसेस हम कर रहे हैं फ्रॉम गाइटन, चैप्टर नंबर 51 आज डिस्कस करेंगे, विच इज द सेकंड चैप्टर ऑन आई. विजन इज अ वेरी स्पेशल सेंस, और उस पर ऑलरेडी हमने एक चैप्टर कर लिया है विच वॉज चैप्टर नंबर 50, विच टॉक्ड एक्चुअली अबाउट द ऑप्टिक्स ऑफ द विजन, जिसमें हमने लेंस और किस तरह से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती हैं, फोकल पॉइंट और ये सारे डिस्कशन किए थे जो बेसिकली फिजिक्स और ऑप्टिक्स से रिलेटेड है. आज we will start talking about the receptor and neural functions of the eye. So basically the neurophysiology of vision, कि जो हम चीज़ें देखते हैं उसमें फिजियोलॉजिकल लेवल पे क्या चेंजेस आते हैं हमारे डिफरेंट सेल्स में जो कि रेटिना पे मौजूद है. रेटिना जो है इट इज़ द लाइट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आई, एंड यू नो दैट कि आफ्टर ऑल दी हैसल व्हेन द लाइट रेज कॉर्निया से गुजर के फिर एक्वस ह्यूमर फिर लेंस और फिर विट्रस, इन सब से रिफ्रैक्ट होके व्हेन इट lays down onto the retina, जब ये strike करती है light rays retina पर, this is where the image is actually processed और फिर वो optic nerve के जरिए brain तक जाती है. So retina is the basic light sensitive portion of the eye जिसपे image बनती है, और इसमें दो तरह के special cells हैं and they are known as the cones which are responsible for color of the vision, and there are rod cells. ये दोनों specialized cells हैं जैसे किसी भी और दूसरे ऑर्गन में होता है. सो इफ यू टॉक अबाउट योर हार्ट यू हैव कार्डियोमायोसाइट्स, इफ यू टॉक अबाउट स्केलेटल मसल यू हैव मसल सेल्स, you talk about cartilage you have cartilages. Similarly if you talk about retina you have cones and rods, and rods का काम है they can detect dim light and they're mainly responsible for black and white vision and also vision in the dark. So if you're talking about colors, it is the cones, and it's easy to remember, C for cone and C for color, so that's a bit easy to remember. And rods the rest of the stuff, यानी dim light में और black and white जो vision है, that is the job of the rod cells. When either rods and cones are excited, and they are basically excited by when the light rays hit them, and the signals are then transmitted first through successive layers of the neurons in retina, because retina की अपनी there are some layers in the retina. We'll talk about them. Histology में पढ़ी भी हैं, but यहाँ पे दोबारा recap होगा. Finally, these signals are then traveled into the optic nerve fibers, and from the optic nerve they reach up till the level of the cerebral cortex. और इस chapter में we explain the mechanisms whereby the rods and cones they not only detect light but then they also transfer the signals to the optic nerve and from the optic nerve to the cortex. So पूरा ये एक पैकेज है कि जिसमें light rays, अगर यहाँ पे कोई object है, if this is you standing and this is my eye seeing you, so light rays hit my retina. As soon as they strike my retina, signals go through the optic nerve to the cerebral cortex. So ये पूरी physiology इस chapter में almost discuss होगी. Okay. Now before we start that, we have to spend some time understanding the anatomy and function of the structural elements of retina. So retina is an extremely important layer. It is composed of 10 layers of boundaries. Now ये मैंने इंद्रबीर सिंह हिस्टोलॉजी में आपको डिटेल में इसकी 10 लेयर्स बताई हैं, बट और यहाँ पे ये दे आर आल्सो शोन हियर. सो इफ यू सी हियर देयर इज अ पिगमेंटेड लेयर, फोटोरिसेप्टर लेयर, then outer limiting membrane, outer nuclear layer, outer plexiform layer, inner nuclear. So you ought to remember the names. ये must है. एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर लेयर में what is the speciality, so what is the specific type of cell present in each layer. So for example you see जो rods और cones हैं उनका एक bit photoreceptor layer में present है, cones के ये देखें और rods का ये area, and they also traverse through the outer limiting membrane as well as the outer nuclear layer, and then they transmit the signals, they synapse with the horizontal cells as well as the bipolar cells in the inner nuclear layer. So this is the synaptic regions present. Okay, so जो rods और cones हैं they actually span at least 3 to 4 layers of retina, and this is a very important diagram to remember. So this particular figure, which is figure 51.1, shows the functional components of the retina which are arranged in layers or boundaries from outside to inside as pigment layer, photoreceptor layer. So if you just see the diagram you will identify this is the first layer, pigment layer. Then there is a photo, ये सारे नाम पर वहाँ लिखे हैं 1 through 10. The last one is the inner limiting membrane, that is number 10. So you can simply count them 1 2 3 4 5 and so on and so forth, 6 7 8. Ninth one is stratum opticum, and then the last one is inner limiting membrane. So these 10 बात चीज़ें फिजियोलॉजी और एनाटॉमी में ऐसी होती हैं which you have to kind of ratify, वो आपकी मेमोरी से डायरेक्टली लिंक्ड होती हैं, so you have to remember them. Okay. Now after
the light rays pass through the lens system of the eye, and then went through the vitreous humor. It hits the retina from the inside of the eye. That is, it passes first through the ganglion cells and then through the plexiform and the nuclei before it finally reaches the layer of rods and cones. So ये arrangement आपको याद रखनी है कि this is the direction. That's very very important. अक्सर स्टूडेंट जब इस डायग्राम को देख रहे होते हैं समझ ही रहे होते हैं कि यहाँ पे लेयर नंबर 1 चूंकि नाम इसका दिया हुआ है ना पिगमेंटेड लेयर का, तो लाइट रेज पहले यहाँ से गुजरती है फिर यहाँ गुजरती है. ऐसा नहीं है बॉस. लाइट रे की डायरेक्शन ये है. यानी अगर आप इस डायग्राम पे इसको फिट करने की कॉन्सेप्ट को कोशिश करो, सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, अगर मैं कह रहा हूँ आपसे कि दिस इज द रेटिना, सो इस रेटिना के अगर 10 लेयर्स हैं, सो डायरेक्शन ऑफ लाइट आप ऐसे इमेजिन करें तो रॉड्स एंड कोन्स टुवर्ड्स द एंड होंगे, यानी टुवर्ड्स दिस साइड होंगे. ओके, सो इमेजिन दिस वुड बी देन द विट्रस ह्यूमर. ये सारा विट्रस ह्यूमर है जिसमें से लाइट गुजर के आ रही है, यहाँ कहीं पर लेंस होगा. ठीक, सो दिस इज द डायरेक्शन. That is an extremely important point to understand the direction of light. Okay, this distance is a thickness of several hundred micrometers. Visual acuity is decreased by this passage through such non-homogeneous tissue. However, in the central region की अभी बात करेंगे, foveal region of the retina is discussed subsequently. The inside layers are all pulled aside to decrease the loss of acuity. So this is the area जहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि जो ये layers हैं, so that's again the vitreous. And if it's the vitreous, it means यहाँ पे vitreous humor है, तो अब direction of light ये होगी, because light has to go through the vitreous to hit the retina. ठीक है, so यहाँ पे direction of light ये है तो vitreous इधर होगा. और इस पर्टिकुलर डायग्राम में दिस इज द रेटिना, उसकी 10 लेयर्स हैं और उनकी अरेंजमेंट आपको समझनी है कि डायरेक्शन ऑफ लाइट ये है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट बिकॉज हेयर इज द विट्रस, एंड दिस इज द पॉइंट जहाँ पे विजुअल एक्विटी जो है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द, बिकॉज यू सी दिस इज द पॉइंट फोविया ऐसे हम कहते हैं, जहाँ पे शार्पली ये देयर इज अ डिप्रेशन एंड द लेयर्स आर अरेंज्ड इन अ वे दैट जो लाइट का गुजरने का सेशन है, मतलब अगर यहाँ से लाइट मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको गुजर रही है, सो सी इट इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ डिफरेंट लेयर्स बिफोर इट हिट्स द रॉड्स एंड कोन्स. लेकिन यहाँ पे ये जो ट्रैवल डिस्टेंस है कम है, यहाँ पे डायरेक्टली रॉड्स एंड कोन्स अवेलेबल हैं, सो लाइट विल डायरेक्टली हिट टू द रॉड्स एंड कोन्स. ओके, सो दैट्स द हिस्टोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट ऑफ द आई एंड द फोविया. Okay, so all very important stuff, guys, huh? Now, the foveal region of the retina and its importance in the acute vision. The fovea is a minute area in the center of the retina. It occupies a total area of little more than 1 square millimeter, so very small point. It is especially capable of acute and detailed vision because ये directly देखें ना rods and cones के साथ axis में है light, so there is no loss of acuity. The central fovea, only 0.3 millimeters in diameter, is composed almost entirely of cones, so sharp colored images form there. These cones have a special structure that aids their detection of detail of the visual images. That is, the foveal cones have especially long and slender bodies, in contradistinction to the much fatter cones located more peripherally in the retina. So, even if you look at this diagram, this distinction is made very, very clear. So, you see there, the cells are a bit broader, and here the cells are sharper. They make sharp images. And this is the point where cones are accumulated, so we have a detailed color vision of an object. Okay. Again, मैं बार बार ये point raise कर रहा हूँ कि अगर आप peripheral area में देखें, so there is a distance which the light rays has to cover before it reaches the rod and cone area. This is the rod and cone area, and this is the amount of area which the light has to travel before it reaches rods and cones. लेकिन यहाँ देखें ये rods and cones directly accessible है, light enter हुई और direct rods and cones, so ये fovea का region है, and this is why this is the area जहाँ पे detailed sharp colored image बनती है. Okay, now rods and cones are essential component of photoreceptors. So obviously ये बात हमें पता है, रेटिना में यही दो तरह के तो cells हैं, rods and cones, and we will go through these diagrams 51, 3 and 4 which are diagrammatic representation of essential components of the photoreceptor. As shown in figure 51.4, अभी दिखाता हूँ. The outer segment of the cone is conical in shape. So let's go to 51.4. So that's the 51.4. It's a membranous structure of the outer segment of a rod and a cone, and you see it's a cone-shaped structure. It's a rod-shaped structure. That's why they are named so. In general, the rods are narrower and longer than the cones. The cones are obviously like this, and the rods are obviously like this. But this is not always the case. In the peripheral portions of the retina, the rods are 2 to 5 micrometer. ये सब details याद रखने की नहीं है, बहरहाल देख लीजिए इसको. The major functional segment of either a rod or a cone
as shown in figure 51.3, the outer segment, the inner segment, and the nucleus and the synaptic body. So these are essential components to remember. ये लेंथ और साइजेस ये कोई नहीं पूछता, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट दैट ये एक पूरा आपके सामने फोटो रिसेप्टर मौजूद है, रेड रॉड और कोन, और इसमें देयर इज एन आउटर सेगमेंट, देन देयर इज एन इनर सेगमेंट, देयर इज ऑब्वियसली अ न्यूक्लियस एंड अ सिनेप्टिक बॉडी. सो अगर ये देखें आप तो ये नाम से भी क्लियर हो जाएगी चीजें. न्यूक्लियस तो ऑब्वियसली वो रीजन है जिसमें न्यूक्लियस है, सिनेप्टिक बॉडी वो रीजन है जो किसी और सेल के साथ साइनैप्स करेगा. सो इफ यू लुक हियर, ये वाली जो डायग्राम है जिसमें 10 लेयर्स बताई हैं रेटिना की, सो यू सी हियर दिस इज अ कोन एंड इट इज साइनैप्सिंग नॉट ओनली विद द हॉरिजॉन्टल सेल बट आल्सो विद द बाइपोलर सेल. इसी तरह जो रॉड है इट इज साइनैप्स जस्ट लाइक न्यूरॉन, जैसे न्यूरॉन साइनैप्स करते हैं बिल्कुल उसी तरह ये रॉड्स और कोन्स भी साइनैप्स कर रहे हैं विद द बाइपोलर सेल्स एज वेल एज विद द हॉरिजॉन्टल सेल्स. ओके, सो दे हैव अ साइनैप्टिक रीजन. तो इन रॉड्स एंड कोन्स का जो ये वाला पोर्शन, सो दिस इज द रीजन ऑफ न्यूक्लियस, this is the region of synapse. So synaptic region है, there's a nuclear region, and then obviously there are inner segment and outer segment. The inner segment contains most of the energy bit, which is the mitochondria, and the outer segment has very special function जो भी हम थोड़ी देर में देखते हैं. So ये 4 segments आपको याद रखने हैं, rods and cones में होते हैं. Okay, the light sensitive photochemical is found in the outer segment. So this is the segment which contains the special chemical called rhodopsin which receives the light. Okay, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे plants में light receive करने के लिए एक special pigment होता है that is called chlorophyll, chloroplast. बिल्कुल ऐसे हमारे पास light receive करने के लिए ये photochemical है which is called rhodopsin. In the cones, it is one of the 3 color photochemicals, usually called simply color pigments, that function almost exactly same as the rhodopsin, except for differences in their spectral sensitivity. So basically photoreceptors जो हैं रॉड और कोन दोनों में इसी तरह की configuration के हैं with some different fine and minor details कि जो cones में होंगे they are more able to differentiate between the spectrum of the colors, और जो rods में हैं वो इतने sharply color को differentiate नहीं कर सकते. So those are called rhodopsin. Okay, in the outer segment of the rods and cones, note the large number of discs. अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये डिस्क्स हैं. देखें कंघी होती है ना, कॉम की तरह से डिस्क्स हैं, ये बिल्कुल कॉम की तरह से इस तरह की अरेंजमेंट है. सो दीज आर कॉल्ड डिस्क अरेंजमेंट. ईच डिस्क इज एक्चुअली एन इनफोल्डेड शेल्फ ऑफ मेम्ब्रेन. देयर आर एज मेनी एज 1000 डिस्क इन ईच रॉड एंड कोन. बोथ rhodopsin जो कि रॉड में होगा, कलर फोटोरिसेप्टर पिगमेंट, एंड वो कलर पिगमेंट जो कोन्स में है, दे आर बोथ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स. They are incorporated into the membranes of the disc in the form of transmembrane protein, and the concentration of these photosensitive pigment in the discs are so great that the pigments themselves constitute about 40% of the entire mass of the outer segment. So इतना rich यहाँ पर photochemical यानी light receiving pigment है. So rhodopsin और color वाला जो pigment है वो इन्हीं discs पर मौजूद होते हैं, very concentrated amount में, बहुत heavy amount में. Okay, फिर जो इनर सेगमेंट, सो आउटर सेगमेंट का समझ में आ गया. आउटर सेगमेंट कंटेन्स द कलर पिगमेंट या फोटोकेमिकल पिगमेंट. अब जो इनर सेगमेंट है इट कंटेन्स स्पेसिफिकली माइटोकॉन्ड्रिया. सो दिस इज द एनर्जी प्रोवाइडिंग हब ऑफ द रॉड एंड कोन. देन देयर इज सिनेप्टिक बॉडी. ऑब्वियसली न्यूक्लियस का रीजन भी है, और सिनेप्टिक बॉडी मैंने आपको बता दिया, दे साइनैप्स विद द हॉरिजॉन्टल सेल्स एज वेल एज द बाइपोलर सेल्स. ठीक हो गई बात. देन लेट्स टॉक अबाउट द पिगमेंट लेयर ऑफ रेटिना. पिगमेंट लेयर, रिमेंबर ये जो मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन यहाँ दिखाई थी, दिस इज द पिगमेंट लेयर ऑफ रेटिना. ओके, द लास्ट वन, ये इवन रॉड्स एंड कोन्स के भी बाद है. सो द ब्लैक पिगमेंट मेलानिन इज द पिगमेंट लेयर, प्रिवेंट्स द लाइट रिफ्लेक्शन थ्रू द ग्लोब. वरना देखिए ना क्या होता कि ये आपका आई का सेटअप है ना, दिस इज योर आई बॉल, ये ऑप्टिक नर्व है, यहाँ से लाइट एंटर होती और रिफ्लेक्ट होने के चांसेस थे. सो लाइट को फुली एब्जॉर्ब करने के लिए रेटिना में एट द बैक एंड देयर इज अ ब्लैक pigment melanin जो रिफ्लेक्शन को रोकता है. This pigment performs the same function in the eye as the black coloring inside the bellows of the camera. कैमरा में सेम टेक्निक होती है ताकि लाइट रिफ्लेक्ट ना होके वापस चली जाए. Without it, light rays would be reflected in all the directions and there would be no precise image. Image ठीक नहीं बनती. नेचर ने कितना ब्यूटीफुल ऑप्टिकल सिस्टम आपको दिया है, जरा ये बात देखें. The importance of melanin in the pigment layer is well illustrated by the absence of the जिन लोगों में albinism होता है. So albinism are the people who have congenital absence of melanin. So उनके जो eyeballs हैं उनमें जो pigment layer है वो black color की नहीं होती है, and those persons cannot see appropriately. वो proper image नहीं बना सकते because they do not have
melanin in their pigmented layer of the retina. Therefore, the light reflect all the way, and therefore they cannot see appropriately. When a person with albinism enters a bright room, light impinges on the retina and is reflected in all the direction inside the eyeball. But the unpigmented surfaces of the retina, and by obviously unpigmented है क्योंकि melanin नहीं है, or therefore the person is just unable to see. Okay, therefore the visual acuity of the person with albinism, even with the best optical correction, is seldom better than 20/100, which is a very low visual acuity. Okay, the normal is 20/20, and we discussed about this in chapter number 50 when we talked about optics of vision. The pigment layer also stores large quantities of vitamin A. That is another importance of pigmented layer. The vitamin A is exchanged back and forth through the cell membrane of the outer segment of the rods and cones, which are embedded in the pigment. When we'll discuss later that vitamin A is an important precursor of photosensitive chemicals for rod and cone. इसीलिए कहते हैं ना गाजर दबा के खाओ, कैरेट खाओ ताकि विजन बेहतर हो. उसका रीजन ये है because carrot contains a lot of vitamin A, which is important for rods and cones. Okay, extremely important discussion, guys. Today what we discuss about rod and cone is super important. तो इसको अगर दोबारा भी सुनना पड़े ना तो ये 10-12 मिनट दोबारा सुन लो because this is very important. The blood supply of the retina is always a central artery and the choroid, and this is an end artery. End artery का मतलब ये है कि अगर ये एक particular artery गई, blindness. The nutrient blood supply for internal layers of retina is derived from the central retinal artery, which enters the eyeball through the center of the optic nerve and divides to supply the entire inside retinal surface. Thus, the inner layers of the retina have their own blood supply independent of the other structures of the eye. Okay, so because it is very important, retina is very, very important. Therefore, it is supplied by a separate designated blood supply. However, the outermost layer of the retina is adherent to the choroid, and it also receives some nutrition from there. Retinal detachment is a phenomena. The neural retina, okay, neural इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें rods and cones हैं, and rods and cones are the cells which are synapsing just like a neuron. So it's actually a neural layer. It occasionally detaches from the pigment epithelium. जैसे अगर किसी के सर पे बहुत जोर से मुक्का मार दिया, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, थप्पड़ लगा दी किसी को, so this detachment can happen. Okay, partly because of this is all now. So that's all about rods and cones. अब discussion को आगे बढ़ाते हैं इस chapter में. Let's talk about the photochemistry of the vision now. That's very nice. मैं हमेशा इसको compare करता हूँ. I don't know if you remember from your high school steps involved in photosynthesis. फोटोसिंथेसिस में होता है कि जी लाइट रे हिट कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट. अभी यहाँ देखेंगे कितने मजेदार चीजें हैं कि जो रॉड्स एंड कोन्स हैं उनमें जब लाइट रे फॉल करती है तो ऐसे क्या चेंजेस आते हैं फिजियोलॉजिकल लेवल पे कि यू स्टार्ट सीइंग समथिंग, आपको वो चीज नजर आती है. सो व्हाट्स एक्चुअली द केमिस्ट्री, द फोटोकेमिस्ट्री ऑफ द विजन. फोटो इसलिए क्योंकि ये सब लाइट के साथ रिंग है. देखिए किसी भी चीज को देखने के लिए आपको 2-3 चीजें रिक्वायर्ड है. सो इफ दिस इज फॉर एग्जांपल अ पर्सन जिसे आपको देखना है एंड दिस इज यू, आप देख रहे हैं और ये चीज आपको दिखनी है, तो व्हाट यू नीड, नंबर 1 यू नीड लाइट. अगर लाइट नहीं होगी, बिल्कुल डार्क कर दो तो ये बंदा आपको नजर नहीं आने लगा. सो लाइट इज एन इम्पॉर्टेंट प्रीरेक्विजिट टू सी एनीथिंग. And then number 2 is obviously your optical system, which is your eye. And the third thing is obviously the thing which you need to see. So object should be there. So ये 3 चीजें किसी भी चीज को देखने के लिए जरूरी हैं. And of primary value is light. बिल्कुल डार्क कर दूंगा, you won't be see anything because आप देखते कैसे हैं चीजों को. The simple physics of seeing anything is basically this, you see. So there is a light source, the light goes, and this light source can be a tube light, it can be a bulb, it can be sun, whatever. So वो light rays इस बंदे पे पड़ती हैं, रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज में जाती हैं, and this is how you start seeing the person. अगर मैं ये light source हटा दूं तो कोई light ray इस बंदे पे आकर रिफ्लेक्ट नहीं होगी, and you won't be able to see anything. That's how you see things. Okay, so photo, light, chemistry, because जैसे ही light rays आपके रेटिना पर पड़ती हैं, rods and cones पर, वहाँ chemical changes शुरू होते हैं और उन chemical changes की वजह से आप देखते हैं. So photochemistry of vision. So let's talk about this. Both rods and cones contain chemical that decompose on exposure to light. तो सारा गेम ये है कि आपकी आई में ये जो rods and cones हैं, इन पर जब light rays hit करती हैं, so they actually decompose और यहाँ से फिर नर्व इम्पल्स या डीपोलराइजेशन की जो वेव है वो स्टार्ट होती है. सो द लाइट सेंसिटिव केमिकल इनमें जो हैं, ऑब्वियसली मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, दे कंटेन पिगमेंट्स जिन पर जब लाइट स्ट्राइक करती है सो दे अंडरगो चेंजेस. और वो रॉड्स में जो केमिकल है उसका नाम है रोडोप्सिन, और जो कोन में केमिकल्स हैं उनको हम सिंपली कोन पिगमेंट या कलर पिगमेंट्स कहते हैं.
ओके अभी ये जो सेक्शन में आगे हम डिस्कशन करने लगे हैं, इट इज प्राइमरली डिस्कसिंग रोडोप्सिन, but similar principles also apply on the cone pigments. Okay, so rhodopsin is basically in rods. मैंने आपको बताया कि अभी जो हम ज़्यादातर डिस्कशन करेंगे that will be focusing on rods with our agreement के similar pattern cones में भी हो रहा है. ठीक है, so rhodopsin retinal visual cycle और किस तरह से excitation होती है rods की. Basically the outer segment of the rod that project into the pigment layer of the retina has a concentration of about 40% of the light sensitive pigment which is known as rhodopsin. यानी ये जो आउटर एरिया है इट कंटेन्स रोडोप्सिन और दिस इज द एरिया जहां से ये सारा गेम अभी स्टार्ट होना है, आप देखेंगे. इस रोडोप्सिन का दूसरा एक और नाम भी है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड विजुअल पर्पल. द सब्सटेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ अ प्रोटीन विच इज कॉल्ड स्कोटॉप्सिन एंड अ कैरोटीनॉइड पिगमेंट कॉल्ड रेटिनॉल. So these two combine together and make rhodopsin. Furthermore, the retinal is a particular type 111 cis retinal. If you have to remember the specific configuration, the cis form of the retinal is important because only this form can bind with the scotopsin. क्योंकि there are trans forms which are unable to bind with the scotopsin. So rhodopsin complete बनने के लिए इसका cis form होना जरूरी है. When the light energy is absorbed by the rhodopsin begins to decompose within a very small fraction of seconds. The cause of this rapid decomposition is photoactivation of the electrons in the retinal portion of the rhodopsin. So light strike करेगी, electrons excite होंगे and there will be decomposition, okay? And therefore it leads to instantaneous change of the cis form of the retinal into the trans form. और जैसे ही transform होता है, so transform is unable to bind with the scotopsin. So basically वो पूरा structure decompose हो जाता है. So story ये है कि as soon as the light energy strikes, all what happens is trans retinol बनना शुरू हो जाता है, उसके टॉप्सिन अलग हो जाता है. दिस इज हैपनिंग इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स क्योंकि जो ट्रांस रेटिनॉल है ये इसको टॉप्सिन के साथ बाइंड नहीं कर सकता. एंड दिस इज व्हाई आई टोल्ड यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको टॉप्सिन प्रोटीन के साथ सिस रेटिनॉल नहीं बाइंड करना है. जैसे ही लाइट रे उसको हिट करती है ये सिस रेटिनॉल कन्वर्ट हो जाता है ट्रांस रेटिनॉल में और ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन. सो डिकम्पोजिशन की कहानी आपकी समझ में आ गई कि लाइट रे के हिट करने से रोडोप्सिन डिकम्पोज होता है. ठीक है, so because the three-dimensional orientation of the reactive sites of all trans retinol is no, so ये सारी स्टोरी अब मैं आपको समझा चुका हूँ कि all trans retinol cannot combine with scotopsin, so rhodopsin की हो गई छुट्टी. ठीक है, इसके काफ़ी इंटरमीडिएट्स बनते हैं बीच में. जब लाइट रेज हिट करती हैं तो डायरेक्टली ट्रांस रेटिनॉल अलग नहीं होता. पहले देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मेथरोडोप्सिन, देन लुमिरोडोप्सिन, देन मेटारोडोप्सिन एंड मेटारोडोप्सिन 2. दैट ऑल इफ यू वांट टू रिमेंबर यू कैन, नॉट इम्पॉर्टेंट, बट द whole idea is important कि as soon as the light strikes to this pigment called rhodopsin, this cis retinol is converted into trans retinol जो कि decompose होके अलग हो जाता है. And then it is obviously reformed. Rhodopsin दोबारा बनता है because there are isomerases available. So isomerases all trans retinol को दोबारा convert करते हैं 11 cis में, which combines with atopsin and the rhodopsin is regenerated. Okay, so reformation of rhodopsin. Now, role of vitamin A in the formation of rhodopsin. Note that there is a second chemical route whereby all trans retinol can be converted into 11 cis retinol. The second route of conversion retinol जो trans retinol है into all trans retinol, which is one form of vitamin A, then all trans retinol is converted into 11 cis retinol. So if you look at the diagram here, the all trans retinol is converted into all trans retinol, which is a form of vitamin A, and this can then also be converted into 11 cis. So vitamin A is also an alternate mechanism of getting cis retinol. और अगर cis retinol आ रहा है तो इसका मतलब alternate also to get a lot of rhodopsin. So ये concepts सारे important है यार. Vitamin A is present in both cytoplasm of the rods and the pigment layer of the retina. Therefore, vitamin A is normally always available to form new retinal whenever it is needed. Conversely, when there is excess retinal in the retina, it is converted back to vitamin A as well. Night blindness is a very, very important condition जिसमें vitamin A deficiency होती है. So obviously the support mechanism of getting more and more cis retinol and getting more and more rhodopsin is not available. So if this is not available, the person is not able to see appropriately in dark, because that is what the job of rods is, to see things in the dark. Okay, color vision is the job of cones. So अक्सर स्टूडेंट मुझे कह रहे होते हैं कि सर ये जो है ना स्पेशल सेंसेस, पर्टिकुलरली
जो ऑप्टिक्स विजन की और फिर न्यूरोफिजियोलॉजी ऑफ विजन इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट भाई डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर बगैर कॉन्सेप्ट के पढ़ना शुरू कर दोगे तो वो नहीं समझ में आने लगी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेन कॉन्सेप्ट्स. ओके, नाउ एक्साइटेशन ऑफ रॉड व्हेन rhodopsin is activated by light. The rod receptor hyperpolarizes in response to light. Exposure of the rod to light causes increased negativity of the intra-rod membrane potential, which is the state of hyperpolarization. This is exactly opposite of the decreased negativity, which is actually the depolarization that occurs in most of the sensory cells. Actually, मैं start में यहाँ कहीं word use कर गया था कि जब light rays strike करती हैं तो depolarization start होती है. It's not the depolarization which starts here. That's my bad. उसको correct कर लीजिएगा. It's actually the hyperpolarization which starts in the rods. How does activation of rhodopsin causes hyperpolarization? The answer is that when rhodopsin decomposes, it decreases the rod membrane conductance of sodium ion. और sodium की conductance कम हुई मतलब hyperpolarization. Okay, that's the simple thing. And then you just simply don't have to worry about all the intracellular signaling. But as you know, मैं book line to line पढ़ रहा होता हूँ, so I'll quickly go through it. Okay, the inner segment continually pumps sodium from inside of the rod to the outside, and the potassium ions are pumped to the inside. So hyperpolarization का scenario develop हो रहा है. As in the other cell, the sodium-potassium pump creates a negative potential on the inside of the entire cell. However, the outer segment of the rod, where the photoreceptor discs are located, is entirely different. Here, the rod membrane in the dark state is leaky to sodium. Listen to this point, that's important. That flow through the cyclic guanosine monophosphate gated channels. In the dark state, cyclic GMP levels are very, very high, permitting positively charged sodium ions to continually leak back to inside of the rod and thereby neutralize much of the negativity. This is what is happening in the dark. Therefore, under normal dark conditions, when rod is not excited, because rod is excited by light, and in dark there is no light, there is reduced electronegativity inside the membrane of the rod. Which goes about minus 40 milliwatts rather than minus 70 to 80. So what a beautiful arrangement. That's how you see in the dark, guys. Okay, so look at this diagram. For example, this is telling you what happens in light and what happens in dark. When light is there, the sodium entry, you see, disturbed. When dark is there, they become leaky to sodium. Okay, so the cyclic GMP channels, they open, and in the light they close. Important point to remember. So this particular diagram is actually showing you flow of sodium in different scenarios. So A is sodium flows into the photoreceptor of a rod, obviously, through cyclic guanosine monophosphate gated channels. Potassium flows out of the cell through the non-gating potassium channels. A sodium-potassium pump then maintains the steady level of sodium and potassium. So this is what is happening in a rod, that there are cyclic GMP gated channels which allow sodium and potassium inflows. Okay, and then obviously to maintain the electrical currents within the rod, they also have sodium potassium ADPase, and this is exactly like other cells of your body जहाँ पे sodium potassium pumps होते हैं. इसमें कोई अलग बात नहीं है. Right. So after all this channel understanding, when rhodopsin in the outer segment of the rod is exposed to light, it is activated and begins to decompose. और decomposition का formula मैंने आपको बता दिया कि होता ही है कि जो trans retinal है वो बनना शुरू हो जाता है और rhodopsin break हो जाता है, decompose. The cyclic GMP gated sodium channels are then closed. ये देख रहे हैं आप लाइट में, these channels are closed, and as a result of this, what happens कि the outer segment membrane conductance of sodium to the interior is reduced. अब सोडियम अंदर एंटर नहीं होगा, and it happens by a three-step process. Number one, light is absorbed by the rhodopsin and it decomposes. The activated rhodopsin stimulates the G protein transducin, which then activate the cyclic GMP phosphodiesterase, जिससे we start getting more and more 5' cyclic GMP, and it closes the sodium channel. So if you look at the diagram here, what happens कि जब light इस पे strike करेगी, so rhodopsin break होगा, rhodopsin break होने के साथ साथ cyclic GMP के levels बढ़ना शुरू होंगे इस pathway से, और cyclic GMP जाके इन channels को close कर देगा. So sodium entry is stopped. Therefore, more sodium ions now leave the rod, then they leak back. So they are leaving out of the rod. Because they are positive ions, their loss from inside the rod creates increased negativity. Now this makes perfect sense. If this is a rod और इसमें से sodium ion अब बाहर ज़्यादा जा रहा है, तो अंदर ज़्यादा negative charge बनेगा ना, क्योंकि positive charge को तो आप बाहर निकाल रहे हैं. जब positive charge निकल जाएगा, so there is increased negativity inside the membrane. हो गया? And this is what we call hyperpolarization.
ओके, दैट्स द मैकेनिज्म जो आपको याद रखना है कि बहुत सारे बॉडी में सेल्स जब एक्साइट होते हैं तो एक्चुअली डीपोलराइजेशन हो रही होती है, लेकिन ये सेल्स डिफरेंट हैं। रॉड्स में जब एक्साइटेशन बाय लाइट होती है तो हाइपर पोलराइजेशन होती है, डीपोलराइजेशन नहीं होती। So very important point. Okay, so let's move on. Duration of the receptor potential and logarithmic relation. Well, this is one thing that I can with confidence say that you can leave. You don't have to remember the logarithmic potentials. Okay. Now, mechanism whereby the rhodopsin decomposition decreases the membrane sodium conductance. ये बात हम कर चुके हैं. This is something that we have already discussed. This simpler mechanism. This is going to be repeated again, perhaps. So I'm not going into the D. So you can simply leave this. Just remember the levels of GMP goes up, and once the level of GMP goes up, they shut down the sodium receptors. So the overall idea is, whenever light strikes, with the striking of light on the rods, rhodopsin break down and the levels of cyclic GMP go up and the sodium channels block and the sodium is not entering into the cell. The interior of the cell become more negative, and this is what we call hyperpolarization. And with this concept, this is all covered. Okay. Now the photochemistry of the color vision by the cones. Cones basically आपके पास उनमें जो पिगमेंट है, यहाँ rhodopsin है ना, rhodopsin ब्रेक हो रहा है, cones में जो पिगमेंट है वो कलर पिगमेंट कहलाते हैं. So we previously pointed out that the photochemicals in the cones have almost exactly the similar composition as that of rhodopsin. The only difference is the protein portion or the opsin portion. Here the opsins are photopsins, and the retinal portion is exactly the same in cones as well as rods. Okay, and there is a color sensitive pigment mechanism. इसका मतलब ये है कि हमारी eyes में we have 3 color mechanisms. So our cones can actually identify red color, for example, green color, and what was the third one? Blue color. Okay, ये 3 तरह के cones होते हैं हमारे पास: red cone, green cone, blue cone. Only the 3 type of color pigments are present, and these are blue, green and red. और अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे, द नेक्स्ट हेडिंग इज अबाउट टू कम, दिस वन, कलर विजन, जिसमें ये बात करेंगे कि इन 3 कोन्स के साथ ओवरलैपिंग स्पेक्ट्रम की वजह से हम डिफरेंट कलर्स के शेड्स देखते हैं. ठीक है, दिस इज अबाउट टू कम, सो डोंट वरी अबाउट इट. Automatic regulation of retinal sensitivity, light and dark adaptation. If a person has been in the bright light for hours, आप बहुत रोशनी में हैं, large portion of the photochemicals in both the rods and cones will have been reduced to retinal and opsins. क्योंकि यही होता है ना, मैं आपको बार बार बता यही रहा हूँ कि जब लाइट रेज स्ट्राइक करती हैं सो हमारा जो रेटिनॉल है वो ट्रांस रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है. सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन लाइट. सो अगर आप ब्राइट लाइट में हैं काफ़ी देर से, तो चांसेस हैं कि आपका काफ़ी सारा जो पिगमेंट है वो अब ट्रांस रेटिनॉल की फॉर्म में, इट इज़ इन द डीकम्पोज फॉर्म. Furthermore, much of the retinal of both rods and cones will have been converted to vitamin A. Because of these two effects, the concentration of photosensitive chemical remaining in the rod and cones are considerably reduced because you have been in the bright light for such a long time, है ना. लेकिन ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि जब आप डार्क में जाएंगे तो आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा, लेकिन होता यह है कि अब आपकी जो आई की सेंसिटिविटी है टू लाइट इज कॉरेस्पॉन्डिंगली रिड्यूस. व्हाट डज दैट स्टेटमेंट मीन्स? यानी आपके पास से फॉर एग्जांपल ये 3 रॉड्स हैं और काफ़ी देर से आप लाइट में हैं, तो ये तीनों रॉड्स के जो पिगमेंट्स हैं वो अब ब्रेक डाउन हो चुके हैं. सो अब आपके पास फर्दर लाइट को अकोमोडेट करने की कंडीशन नहीं. सो योर सेंसिटिविटी टू लाइट इज एक्चुअली रिड्यूस्ड, एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज डार्क एडाप्टेशन. वैसे काइंड ऑफ घुमा फिरा हुआ डिफिकल्ट सा कॉन्सेप्ट है, बट अगर 1-2 दफ़ा सुनोगे मैंने क्या कहा है तो बात समझ में आ जाएगी. Now figure 51.9 shows the course of the dark adaptation when a person is exposed to total darkness after having been exposed to bright light for several hours. Note that the sensitive area of the retina is very low on first entering the darkness. क्यों? क्योंकि ये बंदा जो है ये बहुत देर से ब्राइट लाइट में खड़ा हुआ है. अब जब ब्राइट लाइट में खड़ा हुआ है तो इसके ज़्यादातर रॉड्स एंड कोन्स एक्चुअली यूटिलाइज हो चुके हैं, डिकम्पोज हो चुके हैं, ट्रांस रेटिनॉल बना चुके हैं, विटामिन ए बना चुके हैं. तो अब जब ये सडनली डार्क रूम में एंटर होगा तो इसकी सेंसिटिविटी बहुत ही
कम है. So the sensitivity of the retina has already been utilized here ना. तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते इसकी sensitivity बहुत कम हो गई है. It's actually very very low. The sensitivity entering the darkness, but within 1 minute the sensitivity has already increased tenfold. That is, retina can now respond to light of 1/10 the same intensity. So if you look here, this is the minutes in the dark and this is the relative sensitivity. So starting जब ये start में आया था तो sensitivity बहुत ही कम थी, लेकिन as soon as you are staying in the light for say about 40 minutes, आप देखें sensitivity कहाँ चली गई. So sensitivity is actually increasing as the person is responding more and more in the darkness. और ये हमारी आंखों की खूबसूरती है. This is the beauty of your eyes, that even if you spend a lot of time in lightness, bright light, as soon as you go into the dark, फौरन आपको नजर नहीं आएगा. उसी वक्त आपको ऐसा लगेगा आप अंधे हो गए हैं, जब बहुत रोशनी से बहुत डार्कनेस की तरफ. लेकिन थोड़ी देर बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता डार्कनेस में भी चीजें नजर आना शुरू होंगी. तो इसको हम साइंटिफिक टर्म्स में कहते हैं कि जब आप ब्राइट लाइट से डायरेक्टली डार्कनेस की तरफ जाते हैं तो इनिशियली आपकी सेंसिटिविटी ऑफ रेटिना बहुत ही रिड्यूस होती है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम एडाप्टेशन होती है एंड आपकी सेंसिटिविटी टू लाइट, वेरी लो लाइट इन द डार्कनेस, इंक्रीजेस. ओके, so that's what the curve is all talking about, adaptation curve. This is called the adaptation curve, okay, in the darkness. Other mechanisms, well, this is your eye when you move from very bright light to the dark area. Obviously एक तो rods and cones की sensitivity बढ़ती है, साथ साथ आपका pupil का size भी बढ़ जाता है. So you also start seeing like more light is entering into your eyes so that you can see little more clearly. Okay, value of light and dark adaptation in vision. Between the limits of the maximal dark adaptation and maximum light adaptation, the eye can change its sensitivity as much as 500,000 to 1 million times. You have beautiful eyes. इतनी ज़्यादा रोशनी से डार्कनेस में आकर भी आपकी आंखें काम कर रही हैं. But registration of the images by the retina requires detection of both dark and light spots in the image. It is essential that the sensitivity of the retina always be adjusted. Well, that's not an important paragraph. Confuse करेगा आपको. Let's start talking about very important topic, color vision. From the preceding sections, अभी जितना हमने discussion किया है, we have learned that different cones are sensitive to different colors of the light, because light, you know, is composed of multiple spectrum of colors. So different cones have sensitivity to different colors. Okay, this section is a discussion on the mechanisms whereby the retina detects the different gradations of the color in the visual spectrum. Now if you analyze your beautiful eye कि इसकी जो capacity है, this is your eye, वाह कुछ ना कुछ अच्छी eye बन गई. So if you, I mean, think about yourself कि आप जब कोई भी चीज़ शॉपिंग करने जाते हैं, कपड़े लेने जाते हैं, कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, so how finely actually you can discriminate between the colors. I mean, when me and my wife go for shopping, we always argue. मेरे कलर की सेंस जो है वो बड़ी अजीब सी है. मेरे लिए ब्लू है, बट माई वाइफ के लिए ब्लू भी 50 तरह का ब्लू है. there is a marine blue, there is a navy blue, there is a sky blue, there is a green blue, there is a reddish blue. I don't know what sort of different. So we always argue about this, and they are all different colors. I mean, just imagine the capacity of your eye to differentiate between the different variants of even a same color. So we have these beautiful cones, and these cones are perhaps very strong and powerful in those who can appreciate colors very nicely, just like my wife. So what is the tricolor mechanism for color detection? All theories of color vision are based on the well-known observation of the human eye can detect almost all gradations of color when only red, green and blue monochromatic lights are appropriately mixed in different combinations. So these are therefore called the primary colors, red, green and blue. On the basis of the color vision test, the spectral sensitivities of 3 types of cones in the humans have provided to be essentially the same as the light absorption curves for 3 types of pigment found in the cones. These curves are shown in the figure. We will have a look at the figure, and they explain the phenomena of the color vision. So figure 51.8, for example, is an essential figure which by the looks of it looks very very serious. It talks about, because many students get confused what they are trying to show it here. So on x-axis we have wavelength of the light, and this is where the color differentiates, and this is the light absorption, is the percentage of the maximum. So for example, at 400 to 500
we have maximum absorption of blue color, and this is the wavelength region where you see the blue color most, okay? And so on and so forth. So for green cones, they are absorbing most of the colored light, that particular spectrum, when it's somewhere between 450 and 550. So 450 and more than 600. And for red, it is somewhere between 470, 475 up till almost 700. So if you want to remember, that's fine, but you should have an idea that what are the wavelengths जहाँ पर हमारे different colored cones काम कर रहे हैं. Okay, so that's kind of an important thing to remember. Now, interpretation of the color in the nervous system, amazing area. To be honest, बहुत सारा इसके बारे में we don't know how does it work, but we'll try to explain. One can see that the orange monochromatic light with a wavelength of about 580 nanometers stimulates the red cones to a value of about 99%. Diagram में देखते हैं यहाँ पे. So look here, for example. Okay, now this is the spectral range for orange, and when the orange light hits the retina, what will happen? Orange light की range ये है, so that's the range of the orange light. और यहाँ इन्होंने यहाँ draw भी कर रही है. So that's the kind of the range for orange light. Okay, orange area. Orange light किस कलर को मैक्सिमम हिट कर रही है? आप देखें, देयर इज अ ब्लू कलर. हमारे पास जो कोन्स हैं वो प्राइमरीली 3 तरह के कोन्स हैं: ब्लू कोन, green cone and red cone. So जो wavelength of orange color है, it is hitting most the red. So 99 percentile पर 99 percentage पर ये red color को hit कर रहा है. So the orange is more close to the red one. इसी तरह blue तो obviously blue ही के region को hit करेगा, blue cone को hit करेगा. Green is somewhere in between the, you see यहाँ पे blue and red, so that is the green spectrum. और अगर आप इसके अलावा कोई कलर की बात करते हैं, yellow color, so yellow color is hitting an area which is in between the red and green. So there are spectral overlap. 3 primary colors हैं आपके पास: green, blue and red. Okay, so it stimulates the green cones to a value of about 42%, but the blue cones are not stimulated at all. So what we are talking here is कि जो orange light है वो ब्लू कोन्स को कितना हिट कर रही है, ग्रीन कोन को कितना हिट कर रही है और रेड को कितना हिट कर रही है. सो अगर आप ऑरेंज की बात करें तो वो ग्रीन को भी हिट कर रही, वो रेड को भी हिट कर रही है, लेकिन ब्लू जो है, ब्लू इसकी रेंज में, ब्लू यहाँ खत्म हो गया ना, ब्लू का स्पेक्ट्रम ओवरलैप इस वेवलेंथ पे खत्म हो गया, ऑरेंज का यहाँ शुरू हुआ है. सो ऑरेंज के हिटिंग रीजन में ब्लू कोन्स है ही नहीं. सो ब्लू कोन्स आर नॉट एक्टिवेटेड, बट ब्लू कोन्स आर नॉट हिट, दे आर नॉट स्टिमुलेटेड एट ऑल. Thus, the ratio of the stimulation of the 3 type of cones in this case is 99, 42 and 0. So 99 is for red, 42 is for green and 0 is for blue. तो इसके interpretation क्या हुई इस statement की, इस equation की, कि if the orange light या orange monochromatic light is hitting the retina, it is stimulating 99% of the red cones, 42% of the green cones and 0% of the blue cones. Okay, the nervous system then interpret this setting, okay, 99, 42, 0, and the sensation is interpreted in the higher centers of your brain. Conversely, if a monochromatic blue light with a wavelength of about 450 nanometer is stimulated, और वो जाकर के लाइट पड़ती है आपके रेटिना पर. So अब इस सिनेरियो में, so we're talking about a blue light. So blue light अगर 450 wavelength की somewhere here hit कर रही है, so it's going to excite 97% of the blue cones. It is then not going to excite the red cones. So it will be, see, this is the 450 wavelength, na, blue light. So 97% of the blue cones को ये hit कर रही है, green cones को भी hit नहीं कर रही, 0, और red cone तो बहुत ही देर बाद शुरू हो रहा है. You see that is the idea. यहाँ पे equation हमारी क्या बनेगी? If we have the same equation pattern कि red को पहले हमने लिखना है, then हमें green लिखना है और फिर हमने blue लिखना है. So red is 0, green is 0 and blue is 97. तो equation would be 0, 0, 97. तो आपका brain इसको actually interpret करेगा. And if we are talking about yellow, so yellow light अगर हम देख रहे हैं, so इसकी जो equation है, that is 83, 83, 0. यानी it is hitting red and green but none of the blue cones. Okay, so these are the different mechanisms by which your brain actually work out कि जो light है वो कौन से cones को कितना stimulate कर रही है. ये बात याद रखेंगे, आपके पास 3 तरह के cones हैं. You have red receiving cones, you have green
sensitized cones and then you have blue cones. अब अगर कोई लाइट ऐसी है जो सिर्फ रेड कोन्स को हिट कर रही है तो वो आपको रेड दिखेगी. जो अगर रेड और ग्रीन को हिट कर रही है, ब्लू को हिट नहीं कर रही, तो वो आपको ऐसे दिखेगी कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ दीज टू डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स. अब अगर ये 50-50 हैं, रेड और ग्रीन इस तरह की वेवलेंथ हिट कर रही है रेटिना पर कि 50% ऑफ द रेड cones are stimulated and 50% of the green and 0% of the blue. So जो कलर आपको दिखेगा वो exact mixture होगा रेड और ग्रीन का. So that is what you will see. लेकिन अगर आपको ऐसा कोई कलर हिट कर रहा है रेटिना पे which is 90% red and only 10% green, तो जो कलर आपको दिखेगा it will be more reddish as compared to the green. So this is how different shades are perceived in your nervous system. Okay, I hope this discussion is clear to you because this is very important. Remember, आपके पास primarily 3 ही तरह के कलर को differentiate करने वाले कोन्स हैं और वो हैं रेड कोन, ग्रीन कोन और ब्लू कोन. बाकी सारी कहानी इनके मिक्सचर पर है और ये इक्वेशन अगर आपने समझ ली तो आपकी जिंदगी आसान. ओके. Perception of white light. About equal stimulation of all red, green and blue cones gives one sensation of the white light. अगर ये तीनों cones बिल्कुल equally affect हो रहे हैं then you see the white light. So white light is basically hitting or stimulating your 3 different types of cones equally. This is how the blue cones equal 33%, 33%, 33%. और अगर ये तीनों एक साथ simultaneously hit हो रहे हैं then you see something white. Okay? Right, good. Color blindness. It's a very important clinical situation. Color blindness is when a single group of color receptive cone is missing in the eye. Okay. For example, one can see that green, yellow and orange and red and these are all the colors जो एक wavelength पर spread है. लेकिन अगर एक particular तरह के cones हैं ही नहीं, say for example the person does not have red cone, so he will or she will not be able to interpret anything in this particular range. So that is called color blindness. A person with loss of red cone is called protenope. The overall visual spectrum is noticeably shortened at the long wavelength, and because the lack of the red cones, a colorblind person who lacks green cone is known as deuteronope. This person has, so it's a simple thing, just remember the names and you have the idea that whatever type of cone is missing, that particular wavelength is not covered and all the colors of that particular coverage will not be visible. Okay, right. So blue weakness, only rare condition. Are blue cones missing? Usually it's red and green ones, but they are sometimes missing as well. Okay, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है. Color test charts. A rapid method of determining color blindness is based on the use of a spot chart. ये आपने अक्सर देखा भी होगा रील्स वगैरह में फेसबुक में सामने आता है कि किस तरह का राउंडेड होगा, उसमें जगह जगह ग्रीन स्पॉट्स होंगे, अंदर रेड या ब्लू से 74 लिखा हुआ होगा. तो अगर आप ये नंबर देख सकते हैं तो आपके कलर्ड कोन्स ठीक काम कर रहे हैं, इस तरह की चीज. सो दे यूजुअली राइट डाउन द नंबर सच एज 2, 4, 42, समथिंग लाइक दिस. ओके, and they are in different color combinations. If the person is able to identify and read the hidden numbers, यानी पूरा ये जो चार्ट है गोल दायरा ये ग्रीन या ब्लू कलर का होगा, बीच में शायद येलो से कुछ और लिखा हुआ है. सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग यू आइडेंटिफाई and this is how you test the colors. Remember मैंने आपको visual acuity के लिए बताया था कि we use Snellen chart जिसमें बड़े बड़े letters लिखे होते हैं फिर वो छोटे होते चले जाते हैं बारीक बारीक. So that is a Snellen chart for visual acuity, and this technique is used for checking color vision and the types of color cones that we have got. Okay, so this is super important, ladies and gentlemen. Color vision अच्छों को समझ भी नहीं आती. Remember, we have a tricolor mechanism. We have red, green and blue types of cones और उनका spectral overlap. ये equation समझना बहुत जरूरी है. Okay, let's start now talking about the neural function of retina. Figure 51.1.2 presents the essential of retina's neural connections, showing the circuit in the peripheral retina at the left and the circuit in the foveal retina at the right. So let's have a look at the image, and then this is the image that we are talking. Oh, by the way, here I see something which we discussed in the previous heading. So ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक heading कराई थी, remember? Color test chart की. So this is how the color test charts actually look like. So you can see that there are yellow spots and then there are red and orange spots, and in the middle there is something written. So it's up to you. If you can read this, then it would mean that your color system of the eye, the cones are working fine. Similarly here you look, this is all dark, and in the middle is 42. So and this you should be able to this I think is 74. So it seems like my cones are working okay.
Okay, and this I think is 42 hidden there. So that's the color chart, which are called the Ishihara charts. Okay, so 74 in the first image, and then 42 I think in the second image. So these two Ishihara charts, in the upper panel, a person with a normal vision would read 74. So this is 74. Okay, but then there are also possibilities that somebody starts reading it something like, say for example, 21 or 24. So they also have interpretation there. So if there is a red-green color blind person, that would read it 21. In this chart, in the lower panel, I mean, a red blind person would read it 2. A person with normal vision would read it 42. So that is the beauty. जो blind person होगा उसको वो particular numbers नजर ही नहीं आएंगे. So Ishihara charts are very very useful in interpreting how the color system of the person is working. Now from there, going back to the retinal synapses. So this is the diagram. Here we are looking at the neural organization of the retina with peripheral area to the fovea. So look here. I mean, just look at the image. अभी इसकी डिटेल्स में नहीं जाते, सिर्फ इसको जरा ब्रॉडली देखें. कितने सारे साइनैप्स नजर आ रहे हैं आपसे. यू हैव द कोन्स हियर एंड द रॉड्स हियर. मुझे कैसे पता लगा कौन है? इट इज जस्ट लाइक कंगी की तरह, एक तो कॉम की तरह है, दूसरा इट इज कोन शेप्ड, एंड दीज आर द रॉड शेप्ड. सो देयर आर कोन्स एंड रॉड्स, एंड दे आर साइनैप्सिंग क्वाइट अ लॉट विद द हॉरिजॉन्टल सेल, विद द बाइपोलर सेल. सो वी हैव टू अप्रिशिएट दैट रेटिना के ये जो सेल्स हैं, दे आर जस्ट साइनैप्सिंग लाइक न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स में ऐसे होता है ना, डेंड्राइट्स वगैरह आप जाकर के साइनैप्स करते हैं एक दूसरे के साथ. सो दिस इज व्हाट हैपनिंग इज हियर. And the particular diagram that we just had a look at, वो जो circuits दिखा रहे हैं, they are showing two different types of circuits. They are showing the circuits at the foveal region, so that's the circuit of the fovea. So fovea में there are only cones. You see heavy concentration of cones. So ये वाला जो circuitry area है, this is for cones, and this is for the peripheral area. So peripheral area में rods भी हैं, these are rods, और cones भी हैं. लेकिन fovea पे क्या focus होते हैं? Cones focus होता है. ठीक है? Right. So the different neuronal cell types are as follows. The photoreceptors are obviously the rods and cones. आपको पता है जब अब कभी ये word आएगा photoreceptor या photochemical receptor, you have to understand that we are talking about rods and cones. Then there are horizontal cells, there are bipolar cells, and we just had a look at them. These are the horizontal cells, these are the bipolar cells, and then the bipolar cells are again synapsing with the amacrine cells, and ultimately the synapses are with the ganglion cells, and the ganglion cells are the ones which are then communicating the impulses to the higher centers. So you have to remember the names of all these types of cells. Okay, so bipolar cells, with whom do they synapse? With the ganglion cells and amacrine cells. Amacrine cells क्या है? They transmit signals in two directions, either directly from the bipolar cells to the ganglion cell, or horizontally with the inner plexiform layer of the axons of the bipolar cells to dendrites of the ganglion cells. So all this can be easily seen here, that if you look at the amacrine cells, they are synapsing not only with the bipolar cells but also with the ganglion cells and also with each other. Okay, so this is kind of a very good diagram. Then we have the ganglion cells which transmit output signals from retina through the optic nerve to the brain. So ये जो major output निकल रहा है ना आपकी eyes से brain की तरफ, वो जा रहा है towards the brain, obviously by the optic nerve. और optic nerve में सारे fibers किस चीज़ के आ रहे हैं? These are all the fibers of the ganglion cells. So ultimately जितने भी signals हैं, they go to the ganglion cells after all these synapses, and then the ganglion cells are responsible to get these signals through the optic nerve to the higher centers of the brain. A sixth type of neuronal cell in the retina. So these are all the different types of neuronal cell. Word क्या use हो रहा है इनके लिए? Neuronal cells. These are cells, specialized cells in the eye, but they have neuronal function. Why? Because they are just like neurons. Why? Because they synapse with each other. Therefore, they are called neuronal cell. So another cell is known as the interplexiform cell. This type of cell transmits signal in the retrograde direction from the inner plexiform layer to the outer plexiform layer, and these signals are inhibitory, and they are believed to control the lateral spread of the visual signal. So throughout the body we not only have the excitatory signal, we also have the inhibitory signals, which are equally important, because in this particular case multiple peripheral images have to be inhibited.
Now, the visual pathway from the cones to the ganglion cell function differently from the rod pathway. As is true for many of our other sensory systems in the body, the retina has both old type vision based on rod vision and a new type vision based on cone vision. The neurons and the nerve fibers that conduct the visual signals from the cone vision are considerably larger than compared to that of the rod vision. आपको पता है ना, color vision is the cone vision, okay? And the signals are conducted to the brain 2 to 5 times as rapidly from the color vision for the color vision. Also, the circuitry for the two systems are different. If you look here, now this is the cone circuitry and this is the rod and cone circuitry. So to the right, यानी कि this portion, right side, is the visual pathway for foveal portion of the retina. So when we say the foveal portion, we basically mean कि यहाँ पे cones ज़्यादा हैं, okay? And this illustration shows 3 neurons in the pathway, which are the cones, the bipolar cells, and the ganglion cells. So, if you now try to focus only on the foveal region, जहाँ पे cones सबसे ज़्यादा होते हैं, so you will appreciate कि there are cones. Number 1, इनका synapse हो रहा है with the bipolar cell, and then the third category of cell is the ganglion cell. Although minor synapses are there with the amacrine cell, but just 3 types of cells. Number 1, the cones themselves. Number 2, the bipolar cells, and number 3, the ganglion cell, and the signal is out. अब आप इसको कंपेयर करें, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेल्स भी थे, यहाँ पे काफ़ी हैवी सर्किट्स थे विद द एमिक्रिन सेल्स, बट कोन्स में ऐसा नहीं है. सो कोन्स का डिफरेंट पाथवे है, ठीक है. जबकि टू द लेफ्ट साइड पे तमाम सेल्स हैं, आपने देखा ना, बाइपोलर सेल्स हैं, हॉरिजॉन्टल सेल्स हैं, एमिक्रिन सेल्स हैं, ऑल दीज सेल्स आर अवेलेबल ऑन द लेफ्ट साइड, विच मीन्स फोविया के अलावा जो आई का रेटिना का पोर्शन है. अब ऑब्वियसली मैं बार बार एक बात यहाँ ये कर रहा हूँ कि देयर आर न्यूरो ट्रांसमीटर, कि देयर इज साइनैप्स इन्वॉल्वमेंट. अब अगर साइनैप्स इन्वॉल्वमेंट है तो ऑब्वियसली न्यूरो ट्रांसमीटर्स भी रिलीज हो रहे होंगे. न्यूरॉन्स में भी ऐसे ही होता है ना कि एक न्यूरॉन होता है, दूसरा न्यूरॉन, तो जो साइनैप्स होता है यहाँ पे या एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है या गाबा या व्हाटएवर. सो नॉट ऑल द न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल सब्सटेंसेज यूज्ड फॉर सिनेप्टिक ट्रांसमिशन इन द रेटिना हैव बीन एंटायरली अंडरस्टूड. However, both rods and cones release glutamate. So glutamate is obviously the known one in the synapse with the bipolar cell. यानी rod and cone जब bipolar cell के साथ synapse कर रहे हैं. So if I clarify this image a little bit, कि this is the cone and these are the bipolar cells. तो ये जो synaptic region है, यहाँ पे एक neurotransmitter जो surety के साथ identify हुआ है, that is glutamate. Okay. Histological and pharmacological studies have proven the existence of many types of amacrine cells that secrete at least 8 types of transmitter substances, including GABA, glycine, dopamine, acetylcholine, indolamine. These are all the known neurotransmitters from different cells, such as the amacrine cells. तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी रेटिना में जो सेल्स आपस में साइनैप्स कर रहे हैं, इनमें कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व हैं. Okay, transmission of most signals occur in the retinal neuron by electronic conduction, not by action potential. So very important point, because देखें, एक मैंने अभी तक आपको कॉन्सेप्ट जो इस्टेब्लिश किया है, जो एक्चुअली आइडियली हो जाना चाहिए इस्टेब्लिश, वो ये कि रॉड सेल पर जब लाइट पड़ती है तो एक्चुअली इट लीड्स टू हाइपर पोलराइजेशन, नॉट डीपोलराइजेशन. एंड दिस इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी, बिकॉज इन द रेस्ट ऑफ द बॉडी वेन एवर देर इज एक्साइटेशन ऑफ समथिंग, इट इज यूजुअली लिंक्ड विद डीपोलराइजेशन. बट रेटिना में लाइट की एक्साइटेशन हिट लीड्स टू हाइपर पोलराइजेशन. दूसरा जो एक डिफरेंस है कि इन मैनी प्लेसेस ऑफ द बॉडी द नर्वस इम्पल्सेस ट्रेवल बाय एक्शन पोटेंशियल्स, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन है. समझें इसका मतलब. The only retinal neuron that always transmit visual signal by action potential are the ganglion cells. So जो final output है, it follows the rules of the nervous system as presented elsewhere in the body. So ganglion cells follow that principle. और वो principle क्या है? Traveling of action potentials. Occasionally, action potentials will also be recorded in the amacrine cell. Otherwise, all the retinal neurons या जो भी cells हैं retina के, they conduct their visual signals by electronic conduction, not by action potential. So that's the difference. Electronic conduction means direct flow of electric current, not action potentials, in the neuronal cytoplasm and nerve axon from point of excitation all the way to the output. Even in the rods and cones, conduction from their outer segment to the synaptic bodies is also by electronic conduction. That is when hyperpolarization occurs in response to light, and this is what I have spent considerable time on now, and you should actually understand that whenever light hit the rods and cones, they are hyperpolarized. In the outer segment of a rod or a cone, almost the same degree of hyperpolarization is conducted by the direct electrical current flow in the cytoplasm all the way to the synaptic body.
Therefore, when the transmitter from a rod or cone stimulates the bipolar cell or a horizontal cell, once again the signal is transmitted from input to the output direct by the electrical current flow, not by action potentials. The importance of electronic conduction is that it allows gradient conduction of signal strength. Thus, for rods and cones, the strength of hyperpolarization output signal is directly related to the intensity of the illuminating light. So that's kind of the reason why it happens in eyes and not elsewhere in your body. Now, the concept of lateral inhibition to enhance the visual contrast, which is what we call the function of the horizontal cell. Listen to this very carefully. The horizontal cells, abhi humne yahan diagram mein dekhe the, one of the very important component of your visual system. They synapse with rods as well as cones, and they are very important because abhi jo concept batane ja raha hu lateral inhibition ka, they connect laterally between the synaptic bodies of the rods as well as cones, also with bipolar cells. The output of the horizontal cells are always inhibitory, so they are the cells which inhibit the electronic conduction. Therefore, this lateral connection provides same phenomena of lateral inhibition that is important in other sensory systems. So there are some cells which inhibit the conduction of impulses, and the inhibition job in the retina is taken up by the horizontal cells. Okay, right. Depolarizing and hyperpolarizing bipolar cells. So आप देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता करके आपको तमाम सेल्स के बारे में थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, which is important for you at this level. We discussed rods and cones in great detail because these are the primary cells of your retinal system. But then we talked about what is the job of the horizontal cell. They are inhibitory. Now let's talk about, and we also talked about, by the way, the ganglion cells, which are the ones which take impulses out in the optic nerve. And now we are talking about the bipolar cells. The two types of bipolar cells providing opposing excitatory and inhibitory signals in the visual pathway are the depolarizing bipolar cells and the hyperpolarizing bipolar cells. That is, some bipolar cells depolarize when the rods and cones are excited, and some of them hyperpolarize. These are two possible explanations for this difference. One explanation is that the two bipolar cells are for entirely different types, with one responding by depolarizing and the other responding by hyperpolarizing. The other possibility is that one of the bipolar cells receive direct excitation from rods and cones, whereas the other receives signals directly through the horizontal cell. Depending upon, देखिए ना, अब अगर ये bipolar cell है और इसको horizontal cell input दे रहा है, तो it's definitely going to be inhibitory cell. लेकिन अगर rods and cones से directly ये stimulate हो रहा है, so अगर आप ये diagram याद रखें तो आपको ये बात समझ में आएगी कि जो bipolar cells है ना, इनको दो जगहों से input मिल रहा है. Bipolar cell, so for example this is a bipolar cell. ये bipolar cell को यहाँ input मिल रहा है direct rod and cone से, लेकिन इसी bipolar cell को input मिल रहा है from the horizontal cell as well. So horizontal cell से जो input मिलेगा that will be inhibitory, और यहाँ से जो मिलेगा that will be excitatory. So therefore there are two different functions of these bipolar cells. So that's what you have to remember regarding the bipolar cells. Now, what are amacrine cells? About 30 types of amacrine cells have been identified. It's a big number, by the way. The function of about half a dozen type of amacrine cells have been characterized. One type of amacrine cell is a part of direct pathway of rod vision, that is from the rod to bipolar cell to amacrine cell and then to the ganglion cell. What they do we don't know, but this is the pathway. Another type of amacrine cell responds strongly at the onset of a continuing visual signal, but response dies rapidly. Again, not very sure what they are doing. Other amacrine cell respond strongly at the offset of the signal. Still other amacrine cell respond when the light turned either on or off. So basically we don't know what they're talking about, but these are the cells which are seen to be important not only in the peripheral retina but also at the region of the fovea. Then these are the beautiful cells called the ganglion cells. इनकी speciality ये है कि fibers from the ganglion cells ultimately feed into the optic nerve system. यानी अगर आप ये कहें कि पूरी आइज में से जो सिग्नल जितनी भी प्रोसेसिंग है, देखिए ना ये मामला कहाँ से शुरू हुआ. आइज में लाइट एंटर फ्रॉम द कॉर्निया, फिर एक्वस, फिर लेंस, फिर विट्रस, फिर रेटिना की इतनी सारी लेयर्स. तो ब्रेन तक जो सिग्नल जा रहा है वो ऑप्टिक नर्व के जरिए जा रहा है, और ऑप्टिक नर्व के साथ कनेक्शन किसका है? गैंग्लियन सेल्स का. सो गैंग्लियन सेल के फाइबर्स go into the optic nerve. Each retina contain about 100 million rods and about 3 million cones. Yet the number of ganglion cell is about only 1.6 million, which in this comparison looks a very small number, but the reason is that they basically the fibers combined. Okay, बाकी सारी डिस्कशन इसकी इज़ नॉट समथिंग जो आपको एक दफ़ा पढ़ के समझ में ना आए, बड़ी आसान सी है, इसको देख लेते हैं क्विकली.
it's almost towards the end of the chapter, so let's go through this. However, major difference exists between the peripheral retina and the central retina, क्योंकि central retina जो fovea का region है उसमें cones ज़्यादा हैं. As one approaches the fovea, fewer rods and cones converge to each optic nerve fiber. Not important paragraph. Again, this is not something high yield. So retinal ganglion cells and their respective fields. W, X and Y cells. Early studies in cats describe three distinct types of retinal ganglion cells, which were named W, X and Y based on the different structures and the function. The W cells transmit signals in their optic nerve fibers at a slow velocity. The X cells have a small field. Again, you don't have to remember these categories. Just remember that, these were initial cat experiments. I'm not sure how valid they are even today in human perspective, but that's how the ganglion cells used to be divided. Primates may, however, a different classification of retinal ganglion cell is issued. As many as 20 types of ganglion cells have been described, and the two general classes include the magnocellular and the parvocellular, P cell and the M. These are the categories of the ganglion cells in primates. These are the categories of ganglion cells in cats, for example. The P cells, उनकी कुछ details यहाँ दी है. I would again not suggest going into the details of this. Not important to generate your concepts, okay? Now, excitation of the ganglion cell. Obviously, ganglion cell are most important in, अब खैर हर ही cell important है, हर cell का अपना role है, but ganglion cells इस तरह बहुत ज़्यादा important है because they are in direct connection with the what you call the optic nerve, because इन्हीं के through signals ने travel करना है, इन्हीं के through signals ने जाना है obviously to the brain. So that's why they are very, very important. It is from the ganglion cells that the long fibers of the optic nerve lead into the brain. That's the importance. यही बात मैं भी आपको समझा रहा था. Because of the distance involved, the electronic method of conduction employed in the rod and cone in the retina is no longer appropriate. Obviously, यहाँ action potential ने travel करना है. Transmission of changes in the light sensitivity, as noted previously, many ganglion cells are. So, bottom line जो याद रखने की ना वो ये कि ganglion cells में एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करता है. रॉड्स एंड कोन्स में और बाकी ज़्यादातर सेल्स जो आई के हैं, रेटिना के हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन है. वो छोटे से सेल्स हैं, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन इज ओके, बट गैंग्लियन सेल्स के लॉन्ग फाइबर्स हैं अप टू द ब्रेन, सो दे नीड एक्शन पोटेंशियल ट्रैवलिंग. ओके, वी कैन ईजिली स्किप ऑल दिस, नॉट इम्पॉर्टेंट. ट्रांसमिशन, अच्छा मुझसे अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर ये आपने छोड़ दिया, और यार एक्चुअली काफ़ी अजीब अजीब से कमेंट्स भी कर रहे होते हैं, यार असल चीज़ तो छोड़ दी. ओ भाई, असल चीज़ मेरे स्टूडेंट ने किसी ने जवाब दिया था किसी इसी तरह के कमेंट का कि यार थोड़ा सा टीचर की ना रिस्पेक्ट कर लें, ही इज़ अ प्रोफेसर फॉर अ रीज़न. सो आई मीन ये मुझे डिसाइड करने देना क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है. अगर आप ही ने डिसाइड करना है तो यार आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक. मैं उस पर भी कुछ नहीं कहूँगा, बट आई मीन एटलीस्ट एग्जिबिट सम रेस्पेक्ट यार. एनीवेज, transmission of signals depicting contrast in the visual scene, the role of lateral inhibition. Many ganglion cells respond mainly to contrast borders in the scene, which seems, again, not a heading which we have to worry about at the moment. So basically we are done, okay? So we have actually dealt with the major concepts associated with the real physiology of how you see things. Ye transmission of color signals by ganglion cell. Obviously the ganglion cells are transmitting all the signals. रॉड से भी जो सिग्नल आ रहे हैं वो भी गैंग्लियन सेल से ट्रैवल कर रहे हैं, और कोन से भी जो सिग्नल आ रहे हैं वो भी गैंग्लियन सेल से ट्रैवल कर रहे हैं. ठीक है, व्हेन ऑल थ्री टाइप्स ऑफ कोन्स यानी कि रेड, ब्लू और ग्रीन टाइप ऑफ कोन्स स्टिमुलेट द सेम गैंग्लियन सेल, अगर तीनों इक्वल, आपको याद है मैंने इक्वेशंस बताई थी, अगर दे आर स्टिमुलेटेड इन परसेंटेज रेशियो ऑफ 33 33 33, दैट वुड देन सिंपली मीन कि द पर्सन विल बी सीइंग द वाइट कलर. सो नथिंग न्यू दैट आई एम टेलिंग यू, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है. ठीक है, so that's basically the end of this chapter, very important chapter, and upcoming next will be another chapter on eye, which is the central neurophysiology of vision. यानी इस चैप्टर में हमने फर्स्ट जो चैप्टर डिस्कस किया, चैप्टर नंबर 50 था, उसमें भी टॉक्ड अबाउट द ऑप्टिक्स, यानी लेंस सिस्टम कैसे काम करता है. देन इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर जो आज हम बात कर रहे हैं उसमें वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट रेटिना. रेटिना की प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, लाइट रेज हिट कर रही हैं और कौन से सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं. एंड देन इन दिस चैप्टर वी विल बी टॉकिंग अबाउट सेंट्रल न्यूरोफिजियोलॉजी, यानी व्हाट हैपेंस व्हेन द सिग्नल्स रीच द ब्रेन. जब ब्रेन तक सिग्नल्स पहुंचते हैं वाया द ऑप्टिक नर्व सारी प्रोसेसिंग के बाद, तो आपका ब्रेन उसको कैसे प्रोसेस करता है और कैसे एक्चुअली आपको समझ में आता है कि कौन सी चीज़ लाल है, ब्लू है, मोटी है, छोटी है, लंबी है, पतली है. सो ऑल दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स. ओके, सो दैट विल बी द नेक्स्ट चैप्टर, सेंट्रल न्यूरोफिजियोलॉजी. सो स्टे ट्यून्ड, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज ऑन स्पेशल सेंसेस. बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी, सो आई इनिशिएटेड. ऑल द वेरी बेस्ट.
बात होती है अगली वीडियो में बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा।